आज धेरै खुसीको कुरा छ। हाम्रो पुस्ता जब कि 4-5 पुस्तादेखि हामीसँगबाट अलग हुनुभएको जो फिजीमा बस्दै आउनुभएको रहेछ त्यो हामी समक्ष आइपुग्नुभयो। यो सब हाम्रो अजयजी भगतजीको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई भेट्न पायौँ। यो हामीलाई निकै खुसीको कुरा भएको छ। अब यत्रो 132 वर्ष पछाडि आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाउँदा निकै नै खुसी छौँ र सम्पूर्ण जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल तो जो मातृभूमि होती है ना, वो तो दिल में ही बैठती है। और एक भी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं सोचता हूँ कि ये जो नॉन रेसिडेंशियल सिटीजनशिप है मैं उसको भी अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ है कि मेरा जो ब्लड लाइन है इज फ्रॉम नेपाल। And we will help you for that also. Okay, thank you very much. As much as we can. And it's a bit hilly area here this side, but as we go further तराई की तरह तो बिल्कुल मौसम फिजी की तरह है। हम 2 हफ्ते हो गए, जान ही नहीं पाए कि वी अवे फ्रॉम फिजी। हमें 10 दिन यहाँ गुजर गए, हमें पता ही नहीं लगा कि हम अपने घर पे नहीं हैं। और ये जैसे भाई ने बोला कि इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम, हम आते रहेंगे, जो भी कर सकेंगे हम करेंगे परिवार के लिए, और रिश्ते हमारी टूटने वाली नहीं है। दिट्स माई एश्योरिटी एंड प्रॉमिस फ्रॉम माई एन्टायर फ्यामिली ब्याक होम। धन्यवाद रफत सञ्चार क्लबलाई। यहाँहरू सम्पूर्णमा हामी 2 जना विश्व साइकल यात्री साथी भगत खत्री र म अजय मिश्रको तर्फबाट सादर नमस्कार। हामीले 2061 साल श्रावण 18 गते 2004 अगस्त 2 साइकलबाट विश्व यात्रा सुरु गऱ्यौँ। एउटा नेपालको कला संस्कृति सम्पदा गौतम बुद्ध सगरमाथा वीर गोर्खालीको देशलाई विश्वभरि चाहिँ परिचित गराउँदै गुन्जायमान गराउँदै अगाडि बढ्ने हिसाबमा यात्रा सुरु गऱ्यौँ। र आज यात्रा सुरु गरेको पनि 21 वर्ष भइसकेको छ। र त्यही यात्राको क्रममा साइकलबाट विश्व यात्रा गर्ने क्रममा 2004 को मिडतिर हामी फिजी पुगेको थियौँ। र अहिले पनि हामी हाम्रो पुटुनजी 2024 पुटुन दाई र उहाँ यहाँ नेपाल आएपछि 3-4 दिनपछि हामी यता क्यानाडा हुँदै साउथ अमेरिकाको ट्राभलमा थियौँ। हामी पनि अहिले भर्खरै फर्किरहेको छौँ। र सायद हिन्दीमा भन्नु भएन, उहाँहरूलाई नै बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभएको। तो हम 2024 में ऑस्ट्रेलिया में थे और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड ट्रैवल के लिए साइकिल कर रहे थे। तो वहाँ से एक नेपाली से हमारा परिचय हुआ जो वहाँ पे रहते थे काम के सिलसिले में। और जब उन्होंने पता किया कि हम फिजी जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फिजी, then he introduced us with him. And when we have been to Fiji, then he came to receive us in Nadi airport around evening time. Yeah? We arrived at evening 7 o'clock. He came so far from 117 kilometers to receive us. Then while we were going to his house, on the way he take us one of restaurant, Fiji restaurant, and I think he was Indian, and I asked him, "Are you Indian?" His name is Putun. Then he said, "No, I am not Indian. My ancestor was Nepalese, and my great grandfather was come from Nepal at 1892 in Fiji." Then we were so glad to meet him, and he also feels so glad to meet us, and we emotionally attached with together. Then he said he asked many of Nepalese who came to visit Fiji or in some other works to find his ancestors, but nobody takes it seriously, right? Then we take dinner, and we thought we are traveling around the world for our nation, for our country, and one of the guy somewhere in the world is very eager to meet his
families in Nepal, and he wants to come to Nepal and meet his families. और वहाँ पे हमने खाना खाया रेस्टोरेंट में, और उसके बाद हम फिर गाड़ी से घर के तरफ निकले तो 12:30 बज चुके थे जब हम उनके घर पहुँचे पुटुनदाई के। और भाभी जी सोए नहीं थे और बाबू उनके बेटे भी सोया नहीं था। और उन लोगों ने जैसे भगवान को आरती करते हैं, दिया बाल के हमको आरती करके वो घर के अंदर लेके गए। हमारा वो जहन में अब भी है वो, एंड वी आर सो थैंकफुल फॉर दैट एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हमने सोचा कि इनका वो जो पुरखा है वो किसी भी तरह ढूंढना पड़ेगा। तो उसी टाइम हमने नेपाल में फ़ोन लगाया अपने ब्रदर इन लॉ भिनाजुलाई मैले फ़ोन गरेँ। एन्ड उहाँसँग एउटा लिस्ट थियो। मेबी ही इज अल्सो यु हेभ फाउन्ड द्याट लिस्ट अफ योर ग्रेट ग्रान्डफादर जस्ट 6 months बिफोर वी अराइभ्ड, राइट? The immigration pass. Yeah. Just 6 months ago you get that before our arrived. That he is also lucky for that. And we saw their address of Nepal is Karkineta, and we didn't know about the Karkineta. Then I make a call to Dr. Rosnath Pandey. He is a Secretary of Parliament in Nepal, and I asked him, and I give him phone to talk with him, and he also talked, and he said Karkineta belongs to Parvat Jilla. Then we knew that his great grandfather was from Parvat Jilla. अनि देन पर्वत जिला में एक ब्रदर रहते हैं नारायण शर्मा, उन्होंने भी बहुत बढ़िया भूमिका खेला इनके घर पुरखा ढूंढने के लिए। तो एक घरती लोगों के घर में वो नारायण शर्मा जी पहुँचे। तो हमने उनसे कहा था कि जब हम नेपाल बैक होंगे हमारे ओल्ड टूर के दौरान, जब नेपाल बैक होंगे तो हम आपके ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। फिर एक वीडियो बना के हमने फेसबुक और यूट्यूब में डाला, तो बहुत से लोग वहाँ पे हेल्प के लिए बोलने लगे। तो हमने सोचा कि कोई भी ढूंढे, क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 महीने पहले मुलाकात हो जाएगा। तो नारायण शर्मा जी ने पता लगा लिया इनका जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे पर्वत जिला में, तो वो भी शुक्रिया का हकदार है। ऐसे बहुत से लोग हैं। और उसके बाद हम कीप इन टच में रहे, और फाइनली ही अराइव टू नेपाल, एंड इट्स अ भेरी गुड थिङ्स। एन्ड और नेपालीहरूले पनि उहाँबाट यो लेसन सिक्न जरुरी छ। उहाँ एउटा 5 पुस्ता अगाडि नेपाल छोडेर वहाँ पुगेको मान्छे यति कति खर्च गरेर आफ्नो माटोको सुगन्ध र घर परिवार पुर्खा भेट्नलाई आउनुभएको छ भने अभियसली पनि नेपालमा रहेको हामी नेपालीको पनि राष्ट्रप्रति दायित्व हुन्छ र फ्यामिली एट्याचमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धेरै कुरा अब योभन्दा अरू नराखिकन आई लाइक टु से समथिङ फ्रम हिमसेल्फ, पुटुन घरती, and I forgot her name. Suvenji. They are from Fiji. Now may we hear from something from them. त्यही भन्यो प्लिज। काका नेपाल आउनुहोस्, केही कुरा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद रफत सञ्चार क्लबलाई आज यो एउटा स्टेज दिनुभयो। आज धेरै खुसीको कुरा छ। हाम्रो पुस्ता जब कि 4-5 पुस्तादेखि हामीसँगबाट अलग हुनुभएको, जो फिजीमा बस्दै आउनुभएको रहेछ, त्यो हामी समक्ष आइपुग्नुभयो। यो सब हाम्रो अजयजी भगतजीको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई भेट्न पायौँ। यो हामीलाई निकै खुसीको कुरा भएको छ। र उहाँहरू जसरी नेपालको मायाले लिएर अहिले पनि नेपालीपनलाई छोड्नु भएको रहेनछ, यो त गर्वको कुरा भइहाल्यो। र 132 वर्षदेखि पनि आफ्नो माटोलाई सम्झेर आज नेपालमा हामीसँग भेट गर्न जसरी आइपुग्नु भयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र खास यो मौका जसरी हामीलाई यसरी जुटाइदिने कोसिस गर्नुभयो विश्व साइकल यात्री लगायत धेरै मिडियाहरू मार्फत पनि हामीले यो कुराहरू थाहा पाएर खोजी गरिदिनु भयो। यो सबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यति नै। Namaste. It's been a long 132 years since my great-grandfather was taken to Fiji on an indentured labor scheme. The promises which were made to them was very, very nice promises. But actually when he arrived in Fiji, everything was altogether opposite. There was nothing as promised on the trip. But anyway, he and my great-grandmother, Jalapi, they went as a married couple from here. And they made their way through whatever hardship they faced through the indentured system. And then after 5 years, when it finished, and they decided to stay back in Fiji, and they stayed in a place, and they had I'd say lots of children. My grandfathers, there were 7 brothers, and I wouldn't know how many sisters they had. And then the family became very big because my grandparents had many, many children. I think only the lowest number was my grandfather, Ram Prasad Gharti, who had 10 children. The other grandfathers, they had 12, 14, 15 children. So I'd say the GC family, the Gharti family grew up pretty rapidly, and I'm pretty sure that the GCs are more in Fiji than in Nepal, जो हमारा bloodline है ना. तो वहाँ से हमारे 2 भाई आए, तो खोजबीन हुई, तो उन्हीं के जो because of them I'm here standing today, and very emotional welcome. Actually, I met everyone here, and I'm very much grateful. फिजी तो हमारी जन्मभूमि है, लेकिन मातृभूमि तो नेपाल ही हमारी. तो जिस समय मैं अपने काका के यहाँ पहुँचा, तो एक मुट्ठी को मिट्टी में अपनी मुट्ठी लेकर अपने माथे पर लगाया, उसे चुमा, अपने दिल पर लगाया. ये मेरी पुरखों का मिट्टी है. I actually received tremendous welcoming support from my family here, and most of importantly, we visited Karkineta, where actually my great-grandfather was from, and we also visited my grandfather Jekaka's parents. The house still exists there, and then I had an opportunity to visit the site of where my great-grandfather was, his house was. So at that moment, what you feel? I mean, I cannot express, the emotions cannot be spoken. I think I'm already tearful. And then I captured the foundation, where the house foundation is. I've captured in my video, so it may be shared a bit later. But yeah, it's a long 133 years journey, but I didn't feel that it was so long. Okay, it was just within 1.5 years, I would say, where I gained contact, and then here I am in Nepal.
I visited my great-grandfather and grandfather's place in Karkineta, and then we came to Chitwan where my eldest काका यक बहादुर जी सी रहते हैं और मेरे छोटे काका होम। उससे पहले मुझे रिसीव करने मेरी नानी है, छोटी बहना राशमी जी सी और उसके पिताजी होम जी सी, वो आए थे हमें एयरपोर्ट देखने पिक करने। तो हम यहाँ पर हमें किसी तरह की I didn't feel that I'm away from Fiji. It's a home away from home. It was, I think, soul touching when I saw my grandmother, and I had a very warm reception. I had a very kind reunion, I would say, and each family members, they gave us, me and my younger brother Suven, a very respected, a very warm welcome and a very warm treat. You know, I stay in Nepal. So today is our last day here, and the bond that we have got into now is that the way I feel is that we know each other from years. Yes, though we don't know, but our blood knows that we are from one blood. And then thanks by Jay, by Bhagat, through your hard work, and we've managed to find a long separated, I'd say, family members. And once again, thank you very much. और आपको नेपाल कैसा लगा? Namaskar सभी को. It is a great pleasure to be here with my elder brother. He came to Australia to visit me a couple of months ago. वहाँ उसने मुझे बताया कि हमारी पुरखा की कुछ रिश्तेदारी मिली है और हमें जाना है। तो फिर हमारे परिवार में भी कुछ घटना हुई, इसीलिए हम तुरंत नहीं आ पाए उस समय। और जैसे हमें मौका मिला, ऐसा पता लगा रहा कि इसकी हमारी जो हाजिरा है अम्मा, उसकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो इन्होंने मुझे कहा हमें टिकट डालना है और तुरंत जाना है, क्योंकि ये मेरा एक ही अपॉर्चुनिटी है जो हम उनको देख सकते हैं, मिल सकते हैं। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारी छोटी नानी, हमारे छोटे काका हमको लेने आए। वहाँ से ऐसा पता लगा कि हम दूर ही कभी नहीं थे, हमारे सगे से बढ़ चढ़ के थे। खाना पीना, रहना, सोना, सभी कुछ इन्होंने जिस तरह से प्रबंध किए, ये बड़ी खुशी की बात है। और हमें रिश्ते बना कर रखेंगे और ज़िंदगी गुजर बसर ऐसे करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, म रश्मि जीसी। हामी अब यत्रो 132 वर्ष पछाडि आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाउँदा निकै नै खुसी छौँ र सम्पूर्ण जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि दे आर द पार्ट अफ आवर फ्यामिली नाउ, दे आर आवर फ्यामिली एन्ड दे आर अलवेज वेलकम। अब अहिले यत्रो वर्ष पछाडि उहाँहरूलाई भेट्न पाउँदा चाहिँ खुसीको सीमा नै छैन। अब शब्दमा बयान गर्न पनि सकिँदैन। इमोसनल्ली एकदमै धेरै नै खुसी लाग्यो हामीलाई। र अब पहिलोचोटि अब एयरपोर्टमा देख्दाखेरि नै अब अलिअलि कन्ट्याक्ट पहिला अब मेसेन्जरहरूमा कुरा त भइरहेको थियो, तर यसरी डाइरेक्ट भेट्न पाउँदा, देख्न पाउँदा, उहाँहरूलाई आफ्नो मान्छे भनेर चिन्न पाउँदाखेरि चाहिँ निकै नै खुसी लाग्यो। र आगामी दिनमा पनि अब यो हाम्रो परिवार अझै साथ रहिरहन्छ